क्वेश्चन नंबर 13 का लास्ट पार्ट रह गया था कल. Says hence obtain the exact value of the area. That means now we have to integrate this. Part 2 में we had derived this, and in part 3 you're being asked to find the area. That means you have to integrate it. Let me write that down. A is equals to 1/4 integration from 0 to pi by 2 sine squared 2 theta d theta. So, हमने इस पे पहले भी बात की हुई है कि हम डायरेक्टली साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेट डायरेक्टली नहीं कर सकते, बट हम साइन 2 थीटा को इंटीग्रेट कर सकते हैं, कॉस 2 थीटा को इंटीग्रेट कर सकते हैं. अब जब क्वेश्चन में साइन स्क्वायर थीटा आए या कॉस स्क्वायर थीटा आए तो आपने एक ही काम करना होता है. यू गो बैक टू द डबल एंगल फॉर्मूला. cos 2 theta is equals to either sin cos square theta minus sin square theta, or it's equals to 2 cos square theta minus 1, or it's equals to 1 minus 2 cos square theta. तो यहाँ पे sin square theta है, so I'm going to, oops, I wrote cos 2 times, this one is sin. So अगर मुझे इसको इंटीग्रेट करना है तो I'll have to make this the subject. So instead of integrating sin square theta, what I'll do, I'll make sin square theta the subject here. तो यहाँ हो गया 2 sin square theta equals 1 minus cos 2 theta, और इधर 2 लिख लेते हैं और यहाँ से 2 खत्म कर. इसकी इंटीग्रेशन हो सकती है क्योंकि इसमें है cos 2 theta, not cos square theta. So whenever you have to integrate sin square theta और cos square theta, आपने ये डबल एंगल आइडेंटिटीज यूज करके cos square theta को सब्जेक्ट बना लेना है या sin square theta को सब्जेक्ट बना लेना है, डिपेंडिंग कि क्या गिवन. अगर हमने sin square theta को सब्जेक्ट बनाया तो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग. बट अब हमने इधर इंटीग्रेट sin square theta को नहीं करना, sin square 2 theta को इंटीग्रेट करना है. So all that's left to do is now change this theta to 2 theta. इस एंगल को अगर हम डबल करेंगे तो ये एंगल भी डबल हो जाएगा. It's going to be sin square 2 theta. This theta can be any value. Theta can be 30 degrees. Theta can be 60 degrees. So you can take any value of theta on both sides. तो हम इस theta को डबल कर रहे हैं तो हमें राइट साइड पे भी theta को डबल करना पड़ेगा. तो हमारे पास ये आ गया. So that gives 1/4 0 to pi by 2, और इसकी जगह हमने लिख लिया 1 minus cos 4 theta upon 2 d theta. 2 को बाहर निकाल देते हैं. It's just a coefficient of half. So it's going to be 1/8 0 pi by 2, and now we integrate 1 minus cos 4 theta d theta. 1 की इंटीग्रेशन तो सिंपली थीटा हो जाएगी. 1/8 थीटा माइनस cos 4 थीटा की इंटीग्रेशन होगी sin 4 थीटा अपॉन 4. And then you substitute these limits. Let me check यहाँ पर ठीक है. Yes, looks good. Okay, now we substitute the limits. So 1/8 is still outside. Substitute pi by 2 first. So pi by 2 minus sine 4 times pi by 2 upon 4, and then minus 0 minus 0. So we're getting 1/8 pi by 2 minus, this would be sine 2 pi, वो भी 0 हो गया. So हमारे पास आ रहा है pi by 16. This also becomes 0 because it's sine 2 pi.
which is 0. Okay. तो याद रखना है cos स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा की अगर हमने इंटीग्रेशन करनी हो तो हमें ये डबल एंगल आइडेंटिटी यूज करके सब्जेक्ट बना लेना होता है cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को, और यहाँ पे इंटीग्रेशन में हमने cos 2 थीटा की फॉर्म लिखी है, मतलब क्योंकि cos थीटा को हम cos 2 थीटा को इंटीग्रेट कर सकते हैं लेकिन cos स्क्वायर थीटा को नहीं कर सकते और साइन स्क्वायर थीटा को नहीं कर सकते. क्वेश्चन 40. Express fx in the form a plus blah 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 partial fractions है, और अगर फर्स्ट वैल्यू कांस्टेंट होती है तो वो आपकी क्लियर हिंट होती है कि आपने पहले लॉन्ग डिवीजन करनी है, और इसको देख के वैसे भी पता चल रहा है दैट द highest degree of the numerator is 3 and also the highest degree of the denominator is 3. So if the numerator has a degree equals to the denominator's degree or a degree higher than the denominator's degree, then you have to start with long division. तो पहले long division करते हैं, उससे पहले हमें denominator को expand करना पड़ेगा. So x minus 1 times x square plus 1 बनता है x cube plus x minus x square minus 1. So that gives us x cube minus x square plus x minus 1. So ये बाहर आ जाएगा x cube minus x square plus x minus 1, और डिवाइड कर रहे हैं with x cube minus x minus k. यहाँ पे पावर्स होनी चाहिए in descending order. X square की पावर मिसिंग है, so I'll add 0x square. Now we can start with the long division. It's going to be 1 here, so x cube minus x square plus x minus 1. Change all the signs, minus, plus, minus, plus. 0, x square minus 2x minus 1. X square minus 2x minus 1. So we're getting, अब इसको मिक्स फॉर्म में लिख रहे हैं, इसको इधर लिख लेंगे, इसको इधर लिख लेंगे और इसको ऊपर ले जाएंगे. So we get 1 whole, यहाँ पे आ गया x square minus 2x minus 1, और यहाँ पे आ गया x cube minus x square plus x minus 1. और पहले भी डिस्कशन हुई थी कि जो होल नंबर होता है लाइक 1 whole 2/3 and whole number नहीं, sorry, mixed number जो होता है that's actually 1 plus 2/3. Just like 1.5 होता है 1 plus half. So this can be written as 1 plus x square minus 2x minus 1 upon, अब डिनोमिनेटर को मैं दोबारा से फैक्टराइज फॉर्म में इस फॉर्म में, ताकि हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कर सकें. So that's going to be x minus 1 and x square plus 1. Okay, ये ठीक है. अब हमने इसकी पार्शियल फ्रैक्शन. Okay, let's do partial fraction of this. So that's going to be a upon x minus 1 and plus bx plus c upon x square plus 1. X square minus 2x minus 1 upon x
square minus 2x minus 1, yes, upon x minus 1, x square plus 1 equals a upon x minus 1, और since जो दूसरा फैक्टर है it's quadratic, तो quadratic के साथ हम लिखते हैं bx plus c अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। वैसे a हमने निकाल लिया, अगर हम इस सीक्वेंस को यूज करें तो अब हम इसको b और cx प्लस d कर लेते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा यूजिंग दैट सीक्वेंस। सो दिस वुड बी b और ये इसको कर लेते हैं cx प्लस। Okay, so now we have to find b, c, and d. So start with taking LCM. It's going to be b x square plus 1 plus cx plus d times x minus 1. और यहाँ पे we have x square minus 2x minus. Okay, सबसे पहले I'm going to make this 0. So I'll have to take x equals 1. So let x equals 1. cx plus d तो 0 हो गया. So we have 1 minus 2 minus 1 is, इसके लिए भी calculator use हो रहा है, minus 2 equals b times 1 square plus 1 हो गया 2. So b आ रहा है minus. b minus 1 ही है. Okay. और अब we can't make this 0 because it's being squared. तो हम x स्क्वायर को -1 बना ही नहीं सकते, क्योंकि किसी भी चीज को स्क्वायर करेंगे तो it cannot be -1. So we have to substitute any value of x. I'll start with 0. So let x is equals to 0 because it's pretty simple. So we get 0 square minus 2 times 0 minus 1. We have minus 1 आ गया is equals to p times 1 आ गया. और यहाँ पे c times 0 से c eliminate हो गया. और फिर it's going to be c times 0 plus d, which is going to be d, and with 0 minus 1. It's going to be minus 2. So minus 1 equals p minus d. p is -1. So d is coming out to be 0. D 0. Okay. And now we have to find c, so we'll have to take another value of x. Let's take x equals -1, which we ले सकते हैं. So when x is -1, -2 squared तो 1 हो जाएगा, और फिर -1 squared would be 1, and then -2 into -1 is going to be +2, and then -1, that's going to give us 2, equals p times -1 squared is 1, 1 plus 1 is 2, plus c times -1 is going to be minus c, plus d times -1 is -2. अब हमारे पास ऑलरेडी b की वैल्यू है which was -1, और d की वैल्यू है which was 0. So this is -1 and that's 0. So we get 2 equals -2, और यहाँ आ गया +2c. So 4 equals 2 times c, c equals to 2, which is correct. Okay. So अब हमारे पास सारी values आ गई. d is coming out to be 0, this is coming out to be 2, और शुरू में हमारे पास 1 भी आ गया था. So now this is a. So write that in partial fractions. We get fx equals a is 1 plus p, which is -1 upon x minus 1, or plus cx, which is 2x plus 0,
upon x squared plus 1. So that's part 1. Partial fractions में हमने कर लिया convert. Okay, next part में कहा है, let me slightly zoom in. Next part में कहा है कि integrate this fx from 2 to 3, between 2 to 3, and show that the answer is equals to 1. So अब हमने जो partial fraction किए हैं इसको हम integrate कर देते हैं from 2 to 3 limits और answer 1 आना चाहिए. So let's integrate this within the limits 2, 3. Okay. So let me just simplify this slightly. It's going to be integration from 2 to 3, 1 minus 1 upon x minus 1 plus 2x upon x squared plus 1. Okay. 1 की integration to simply x हो जाती है. Then a minus sign. For this, we're using the rule that if we have fx in the denominator and its derivative in the numerator, so integration is equals to ln fx. So we do have a function x minus 1 in the denominator. Uska derivative 1 ही होता है, which is already in the numerator. So this would be ln x minus 1. Plus, second में भी वही rule लग रहा है. There's a function in the denominator, x square plus 1. और numerator में इसका derivative है 2x. So this is also going to be ln x squared plus 1. And the limits are 3 to 2. Now substitute the values. 3 minus ln 2 plus ln 10 हो गया. 3 square plus 1, 10. Then a minus sign. And then 2 minus ln 1 plus ln 5. ln 1 तो वैसे ही 0 होता है. So this is 0. Okay, हमें क्या दिखाना है कि this is equals to 1. Yeah. So we have 3 minus ln 2 plus ln 10 minus 2 minus ln 5. Okay. अब ये 3 minus 2 तो 1 आ गया. और मेरे पास है minus ln 2 plus ln 10 और minus ln 5. And 10 और minus ln. अब log का एक rule होता है, which is, we've already discussed this. If we have ln AB, that is equals to ln A plus ln B. So you can also go from here to there. So, इसी तरह हमारे पास होता है ln A upon B. It's equals to ln A minus ln B. And you can also go from here to here. So if we use that here in दोनों पे, so ln 10 minus ln 5 क्या हो जाएगा? ln 10 upon 5. This becomes ln 10 upon 5, which is ln 2, which cancels with negative ln 2. So we get a 1.
Next question start. कोई question है? An appropriate form of expressing this in partial fraction is this, where a and b are constant. Without evaluating any constant, state approximate form for expressing the following in partial fraction. बस दिखाना है कि वो a और b के फॉर्म में कैसे लिखे जाएंगे as partial fraction. You don't actually have to find that out. So 4x upon x plus 4 and x squared plus 3. How do we write this as partial fraction? The first factor is linear, so it's going to be a upon x plus 4. Second factor is quadratic, so it's going to be plus bx plus c upon x squared plus 3. For part 2, it's going to be 2x plus 1 upon x minus 2, x plus 2 squared. That gives a upon x minus 2, so the first factor is linear. Second factor is also linear, x plus 2, but repeated, उसके ऊपर square है. इसका पहले लिखते हैं b upon x plus 2, और फिर एक दफा और लिखते हैं c upon x plus 2 squared. part b कर रहे हैं. So part B में we'll have to actually do partial fractions. So 3x upon x plus 1, x minus 2 को हम directly नहीं integrate कर सकते. तो partial fraction करेंगे a upon x plus 1 plus b upon x minus 2. So it's going to be, take LCM here, a x minus 2 plus b x plus 1. Okay, and here we have 3x. The denominator gets eliminated. X को 2 अगर हम suppose करें, so we get 6 equals 3b, so b equals to 2. Similarly, अगर हम x को -1 suppose करें, so we get -3 equals a minus 3 plus b times 0. So a is equals to 1. So this is coming out to be 1, and this is coming out to be 2. Okay, now integrate this within the limits 3 to 4. Show that the result is equals to LN5. Integrate within the limits 3 to 4, 1 upon x plus 1 plus 2 upon x minus 2. It's going to be ln x plus 1. Same rule, denominator में function and numerator में इसका derivative है. So integration is equals to ln of the denominator. और plus इसका 2 तो integration के sign के बाहर आ जाएगा. And same logic here, in the denominator you have x minus 2, in the numerator you have its derivative, which is 1. ln x minus 2, limits of 4 and 3.
So we get ln 5 plus 2 times ln 2. पहले मैंने 4 सब्स्टिट्यूट कर दिया, नेगेटिव साइन ln 3 plus 1 4 plus 2 ln 1. ln 1 तो खुद ही 0 हो गया, and 4 can be written as ln 4 can be written as 2 ln 2. How is that? इसको पहले हमने लिख लिया ln 2 स्क्वायर और फिर हमने इसको लिख लिया 2 ln 2. So अब प्लस ln 2 और माइनस ln 2 हो गए कैंसिल. So we just get ln. Okay, now let's take a look at question 16. Use the substitution x equals sin square theta to show that square root of x upon 1 minus x is equals to that. Okay. So जब भी substitution use कर रहे होते हैं तो to integrate, start with what's given to you. X equals sin square theta. Derivate करेंगे दोनों sides को with respect to the variable on the right, which is theta. So dx over d theta is 2 sin theta. So dx equals, अच्छा 2 sin theta और फिर sin theta दोबारा डेरिवेट होगा. रिमेंबर जब हमारे पास होता है fx पावर n और इसको हम डेरिवेट कर रहे होते हैं, that equals to n fx n power minus 1, sorry, yeah, power n minus 1 times derivative of x. तो मैंने वहां derivative of x मिस किया हुआ है. So derivative of fx, तो fx है sin theta, sin theta का derivative होता है cos theta, so times cos theta भी आएगा इधर. So dx equals 2 sin theta cos theta. Now make the substitutions here. So integration square root x की जगह हम लिख लेंगे sin square theta न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में लिखेंगे हम 1 minus sin square theta और dx की जगह हम लिखेंगे 2 sin theta cos theta. I'm just gonna give the board a second to come back to charge it. Okay. अब डिनोमिनेटर तो हो गया cos square theta और ये हो गया sin square theta और 2 sin theta cos theta. So the square root and the squares cancel out. But that's not cos square theta, cos theta हो गया denominator. Okay, cos theta cancel हो गया. तो हमारे पास इंटीग्रेशन में आ गया 2 sin square theta. ये दिखाना था हमने. Yes, 2 sin square theta d theta. d theta नहीं मैंने लिखा, यहाँ पे भी एक d theta था, यहाँ पे भी d theta था. d theta missed. ये डिनोमिनेटर से d theta इधर गया था, so we have a d theta here
and the d theta here. In the next step, we integrate it. वन टू फोर लिमिट्स को पहले कन्वर्ट कर लेते हैं थीटा की लिमिट्स में, ये x की लिमिट्स गिवन. So x equals sine square theta given. So if x is 0, then theta also has to be 0. So theta will be 0 without any working. और अगर working करनी है तो पहले square root लोगे दोनों side पे, so you get 0 is equals to sine theta. और फिर sine inverse लोगे 0 का, so you still get a 0. So 0 is equals to theta. So यहाँ पे हमारी lower limit 0 ही है. अपर लिमिट के लिए हम x को रिप्लेस करें 1/4 से, और हमने अब थीटा फाइंड कर. So स्क्वायर रूट ले लिया, हाफ आ गया, और फिर साइन इनवर्स कर दिया. So that gives us, make sure you're in radians, sine inverse of is 5/6. So upper limit आ गई 5/6. Let's confirm. ठीक है, okay. अब फिर साइन स्क्वायर थीटा को हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते, हम कॉस की डबल एंगल फॉर्मूलाज की हेल्प लेंगे. So cos 2 theta is equals to 1 minus 2 sine square theta. Make sine theta the subject, so 2 sine square theta दूसरी साइड पे चल जाके पॉजिटिव हो जाएगा, और फिर उसका 2 इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा. So we get sine square theta here. So I'm going to bring out this 2. ये 2 integration के बाहर आ गया. Inside we have integration from 0 to 5/6 of 1 minus cos 2 theta upon 2. 2 and 2 cancel each other out. So we just have to integrate 1 minus cos 2. Okay, integration of 1 is theta. Integration of cos 2 theta is sine 2 theta upon 2. And I will substitute the limits 5/6 and 0. So it's going to be 5/6 minus sine 5/3 upon 2 minus 0 minus 0. So 5/6 minus gives under root 3 upon 2. Exact form में आंसर देना है तो this is the answer. That's under root 3 upon 3.4 लिखा हुआ है. Okay, denominator में भी एक 2 था. So yes, so 4 हो जाएगा. So minus under root 3 upon 4. Okay, this gives under root 3 upon 2. So there's also a 2 in the denominator. So this would be the answer. कोई question है तो please पूछो. I'm going to give the next 2 questions as homework. Okay, and I'll see you guys tomorrow. Allah Hafiz.